Assalamu alaikum dear students. This is me Syed Shaziah, your concerned physics teacher. Today I am going to deliver my fourth lecture on motion and time. And our today's topic is distance time graph. I hope all the students are healthy and they are attentively watching these lectures. So till now we have studied about motion. What is motion? What is state of rest? What are types of motion? We have studied about speed. We have also studied about time and motion or periodic motion and its example simple pendulum. We have also discussed many things which are our many terms regarding the motion and time. Now it is the last topic of this chapter, which is distance time graph. What do we mean by distance time graph? Distance time graph is the graph plotted between the distance and time. It is a graph which we plot between distance and time. The result or the consequence of this graph is that we can calculate speed by using this graph. The slope of the distance time graph gives us the speed of an object. If we plot distance time graph of an object, we can calculate the speed of that object. You people might have seen this graph paper. This is a piece of paper or a graph paper. This graph paper contains two types of lines. One are vertical lines and other one are horizontal lines. The vertical lines like this line, these are called vertical lines. This is y-axis and this horizontal line is known as x-axis. So this vertical line is the y-axis and this horizontal line is the x-axis. So this is a graph paper in which the vertical lines are denoted or represented or treated as y-axis and the horizontal lines are treated as x-axis. These vertical and the horizontal lines are perpendicular to one another. So now we have to plot a distance time graph. You people got an idea about the graph, what is x-axis and what is y-axis. Okay, now the distance time graph is a graph which represents the distance traveled by an object with respect to time. Okay, it is a graph which represents distance traveled by an object with respect to time. That means one of the axes represents distance and the other axis represents time. Say for instance we have x-axis and y-axis. We categorize or we say that x-axis represents time and y-axis represents distance. Now the first point is that what we have to do first is that we have to mark x-axis and y-axis and divide them in equal quantities. फर्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है, हमें मार्क करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को. यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस रखा, इट इज़ द हॉरिजेंटल लाइन, और वाई एक्सिस हमने रखा, दिस इज़ द एक्स एक्सिस, दिस इज़ हॉरिजेंटल लाइन एंड दिस वर्टिकल लाइन इज़ द वाई एक्सिस. We have categorized them as x-axis and y-axis. Now we have marked the two axes as first as x-axis, horizontal line x-axis, and the vertical line as y-axis. Second point is we have to choose one scale to represent distance. For example, x-axis to represent distance. ठीक है, हमें इनमें से एक एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है एज डिस्टेंस, बिकॉज इस टाइम हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ग्राफ नहीं डाल रहे हैं. हियर द टू फिजिकल क्वांटिटीज आर डिस्टेंस एंड टाइम, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट वन एक्सिस बाय डिस्टेंस. ठीक है, वी टुक एक्स एक्सिस एज डिस्टेंस एक्सिस
where 1 kilometer is equal to 1 centimeter, we have to assume that let 1 kilometer is equal to 1 centimeter or 1 kilometer is equal to 1 unit of length. ठीक है, एक यहाँ पे हम रखेंगे ये जो हमने डिस्टेंस एक्सीज रखी एक्स एक्सीज, यहाँ पे 0 to 1 1 सेंटीमीटर की गैप हम रखेंगे, 1 से 2 के बीच में 1 सेंटीमीटर की गैप, ऐसे 2 और 3 के बीच में 1 सेंटीमीटर की गैप, एंड वी एज्यूम दैट दिस 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एंड द अदर एक्सिस जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है उसको हम एज्यूम करेंगे इट रिप्रेजेंट्स टाइम. वहाँ पे हम फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस को हमने टाइम के लिए रखा. ठीक है, वाई एक्सिस टू रिप्रेजेंट टाइम वायर 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकेंड. वहाँ पे हम एज्यूम करेंगे लेट 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकेंड. ठीक है, यहाँ पे हमने 0 to 1 ऐसे ही एक एक सेंटीमीटर की गैप रखी है. ठीक है, 0 to 1 रिप्रेजेंट्स 1. ठीक है, 1 मिनट को 1 मिनट को हमने रिप्रेजेंट किया है 1 सेकेंड से. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 एंड सो ऑन. ठीक है, now the third point is we have to mark the values of time and distance in the graph. जो भी हमने ग्राफ अब डाला, जो हमने x एक्सिस और y एक्सिस को फिजिकल क्वांटिटी से अब डिनोट किया है, we have to represent the value of that quantities on the graph. Here the two quantities are distance and time. Fourth point is mark the set of values of time taken and distance covered in that time by the object in the graph. इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें क्या करना है, अब हमें सेट ऑफ वैल्यूज़ जो डिस्टेंस और टाइम के वैल्यूज़ हैं इनको हमें इस ग्राफ में अब क्या करना है, मार्क करना है. फॉर एग्जांपल इफ 1 किलोमीटर इज कवर्ड इन 1 मिनट देन मार्क 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, दैट इज बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अगर किसी ऑब्जेक्ट ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है 1 मिनट में, हमने 1 किलोमीटर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है किससे, 1 यूनिट से. दैट मीन्स 1 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर की है, दैट मीन्स 1 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है 1 सेकेंड में. दैट मीन्स वी हैव टू ड्रा परपेंडिकुलर टू 1, यहाँ से डिस्टेंस पे एक ये परपेंडिकुलर ड्रा करना है और यहाँ से भी परपेंडिकुलर, जहाँ पे ये 2 पॉइंट्स मीट करेंगे यहाँ पे हमें एक पॉइंट डिनोट करना है. दिस इज द पॉइंट 1 1. ठीक है, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज हमें क्या करना है, नाउ ड्रॉ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट्स दैट यू हैव मार्क्ड. जहाँ पे भी आपने ये पॉइंट्स जो आपने मार्क किए हैं वहाँ से हमें लाइन्स पैरेलल डालनी है टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. मार्क द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन्स इंटरसेक्ट ऑन द ग्राफ. अब आपको देखना है जहाँ पे पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से आपको मार्क द पॉइंट्स वेयर द दीज लाइन्स intersect on the graph. These points show the position of the moving object. जो भी आपको रीडिंग होगी वो इस ग्राफ पे आपको अब डालनी है. ठीक है, जो भी आपके पॉइंट्स आएंगे एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स वी हैव टू ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स. ठीक है, टू ऑब्टेन ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ. अब हमारे पास जो भी ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन इधर हाइपरबोला पैराबोला और समथिंग एल्स, हमें इन पॉइंट्स को लास्ट में क्या करना है, ज्वाइन करना है. जो ये लाइन आएगी हमारे पास, जो भी फिगर हमारे पास आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. This is an example of distance time graph. Here 2 lines are drawn on the graph. That means this is the graph of 2 moving objects, object A and object B. ठीक है, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इससे हमें पता चलता है कि किस ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड है. वो हमें पता चलता है कि हाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ. फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑब्जेक्ट ए का ग्राफ जो है और ऑब्जेक्ट बी का ग्राफ जो है, इनमें से हमें देखना है मोर
किसका ज़्यादा स्लोप है, ठीक है, कौन ज़्यादा स्टीपर है। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा स्टीपर होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो कम स्टीपर होगा या कम स्लोप जिस ऑब्जेक्ट का होगा, जिस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कम स्लोप होगा या कम स्टीपर होगा, वो बोलेंगे हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कम है, ठीक है। स्पीड ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये हम कैलकुलेट करते हैं बाय स्लोप ऑफ द ग्राफ। द स्टीपर द स्लोप ऑफ द ग्राफ द मोर इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द ग्राफ गिवन बिलो ए हैज स्टीपर स्लोप। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए जो है इसका ज़्यादा स्लोप है, ठीक है, ये ज़्यादा स्टीपर है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट बी। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ए जो है इसकी स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट बी, बिकॉज द ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो ए ऑब्जेक्ट का है इट इज़ मोर स्टीपर देन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट बी। सो बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन कैलकुलेट द स्पीड of an object. This is another distance time graph of three moving objects. See, this green line represents distance time graph of an object, ठीक है, which is moving fast, ठीक है, but with steady speed. Its speed is increasing steadily, ठीक है. This red line represents the speed of another object. Its speed is first increasing and the object then comes to rest. Or we can say the distance of the object remains constant with time. That means this object is at rest in this time interval. In this time interval, this object is at rest, or we can say the object is stationary. And in the last phase of time, the object returns to the start. It returns to the initial position. And the third graph, which is represented by the blue line, this is graph of the third moving object, which is getting faster. First the speed is less, then it is increasing with the passage of time, or we can say the object is getting faster. In this way we can study the distance time graph. It actually helps us to understand the speed of an object. By the slope of the distance time graph we can calculate the speed of an object. Speed हमने बताया था, speed is equal to distance divided by time. Distance we can calculate, it is final position of the object minus initial position divided by time taken by the object. So by the distance time graph we can calculate the speed of an object. This was all for today. Thank you. Have a fruitful lecture. Stay safe. Stay home.